Acha, now look at this question number 6 from atoms. It says that would the Bohr's formula for hydrogen atom change if proton had a charge of plus 4 by 3e and electron had a charge of minus 3 by 4e? Had there been any, will there be any change? देखो there won't be any change. Why? Because नॉर्मली जब क्या होता है प्रोटॉन बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है इन ऑर्बिट्स when we apply the concept of centripetal acceleration from the Coulomb's law, मतलब the Coulomb's law of attraction provides the necessary centripetal force. उसमें फॉर्मूला क्या बनता है half m v square equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 Q2 में एक e होता है दूसरा भी e होता है. Ze मतलब z तो 1 होगा ना, हाइड्रोजन एटम के लिए z 1 होगा तो e into e by r square होता है. So it is e square by r square, 1/2 m v square. अब जब हम लोग सेंटर में चार्जेस का वैल्यू चेंज कर रहे हैं लेकिन मास का वैल्यू चेंज, तो इन दैट केस केस 1 और यहाँ पर जो दिया हुआ है केस 2 के लिए यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर विल बी 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 है 4 by 3e into Q2 है 3 by 4e by r square. तो इसमें क्या हो रहा है देखो 4 4 3 3 कैंसिल ऑफ हो रहा है and is giving you the same value of e square by r square. तो इसके कारण क्या होगा, there will be no effective change in the इसमें कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ आया? हो गया ठीक है. अच्छा ठीक है. So in this case, question number 6, there will be no changes because in both of them finally we get e square by r square. Okay. Acha, see, question number 7 says an ionized helium molecule consists of one electron and two protons. मतलब He plus उसमें क्या होता है, दो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता है. लेकिन they are saying instead of the two protons being situated inside the nucleus, if the two protons were actually separated by a certain distance, तब ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है will it be a circle any longer? The answer will be no. The reason is these two will not apply the same force at all the points, and that's why it will take a elliptical shape. So the electron will start moving in an elliptical orbit instead of a circular orbit. Okay, let's write this down. The electrons will move in elliptical orbits. Will move in elliptical orbit. Okay, now question number 8 says that the radius of innermost orbit of electron r is equal to r1. Innermost orbit is r1 is equal to 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. They wanted to find out the radius of the n equal to 2 and n equal to 3 orbits. Now see, it's a very simple thing. We have already done that radius of nth orbit. Nth orbit का radius होता है n square epsilon naught by pi m e square z. Now for hydrogen atom z is equal to 1 and all these things are constant. So you can say Rn is proportional to n square, right? So if R1 is this, then R2 will be, that means for n equal to 2, R2 will be equal to R1 into 2 square and R3 will be R1 into 3 square and so on. So that's it. Proportional to n square, সেজন্য এটা 2 square বা 3 square. তাহলে এখানে 2 square মানে হচ্ছে 4, so 4 into 5.3 into 10 to the power minus 11, that's 9 into 5.3 into 10 to the power minus 11 meters.
हाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को R1 नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली में क्या है देखो, R1 के लिए it will be 5.3 into 10 to the power minus 11 into 1 square ना, तो अगर मुझे R2 निकालना है so it will be this into 2 square, so that is ये वाला वैल्यू भी आ जाएगा ना वहाँ पर, समझ रहा है? माने even if you are seeing it like this, R1 by R2 equal to 1 square by 2 square, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, तो obviously R2 क्या आ रहा है, 2 square into R1. Similarly, R1 by R3 is equal to 1 square by, so R3 square, sorry, R3 is equal to 3 square into R1 and so on. So कोई भी मेथड से करो, वैल्यूज डालो और उसका आंसर निकल जाएगा, समझ में आया? अच्छा, now the next question, এটা হয়ে গেছে? देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज, मतलब R1 फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम Z is equal to 1 and R1 is equal to 0.53 angstrom. This is given. ठीक है? अब बोला है कि what will be the radius of the third orbit and the first orbit of singly ionized helium atom. So we need to find out for helium atom Z का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर R1 कितना है पूछा है और R3 कितना है पूछा गया है, कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो हाइड्रोजन के लिए अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे तो Rn जो है वो दिया हुआ है 0.53 R1, so 0.53 is equal to h square epsilon naught by pi m e square into n square by z बोल सकते हैं ना हम लोग ये वाला फॉर्मूला से, यस और नो? इसके लिए z का वैल्यू कितना है, 1 है, और ये वाला सिचुएशन के लिए n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर है, हाँ ना? सो दैट मींस ये इसको इक्वेशन 1 मान किया। अब यहाँ पर जो R1 निकाल रहे हैं तब R1 इज इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m e स्क्वायर इनटू यहाँ पर z कितना है और n कितना है, फर्स्ट हम लोग R1 निकाल रहे हैं, so it will be 1 square by 2 आएगा, हाँ है ना? So now this is equation 1, this is equation 2, हम लोग अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, R1 by 0.53 angstrom is equal to this by this, R1 by this is equal to 1 by 2, because if we divide this expression and this expression will get cancelled. So ये by ये will be half by 1, so that is half. So will you, how much will you have? R1 as 0.53 by 2. So right. Similarly, if you want to find out R3, then you can frame out the equation R3 equal to h square epsilon naught by pi m e square into 3 square by 2. You understand why 3 square by 2? n है 3 और z है 2, so they are proportional. Now you can divide this equation and this equation. R3 by 0.53 is equal to 9 square by, sorry, 3 square is 9, 9 by 2. So the answer will be R3 equal to 9 into 0.53 by 2. ठीक है, जल्दी से बना लो।